Good morning, students. Welcome to Commerce Gyanpeeth. Today we'll start with the pledge portion of the act. बुझिला? The pledge portion section number 172 provides the bailment of goods as security for payment of debt or performance of a promise. ଆମେ bailment payment केमती होची तो एटा security for payment of debt. Security for payment of debt. Security वाली जिनसटा को हमें मेनली कोच कोन प्लेज हैला कोन प्लेज करके तमे लोन डा नोचो कि लोन डा इनिशिएट करछो सेटा तो सी कोची either this can be for the payment of debt or performance. Second point कोन हमरो performance माने से कोची जो सिक्योरिटी टा तमे रखुछो तार पर्पस कोन हे पारियो प्लेज भीतर हमें शिक्षा कोन सेक्रेटरी थिबार दीटा पर्पस अछि गुटे होची एदर डेट टा सिक्योर करिया पे हैला माने तमे डेट टा सतरे रीपेमेंट करिवो से एश्योरेंस टा देबा पे फर्स्ट सेकंड पॉइंट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट माने किछि भी जिंस परफॉर्म माने स्पेसिफिकली से मेंशन करथिबो कि एति दिन भीतर तू सर्विस टा प्रोवाइड एति दिन पर कोन कॉन्ट्रैक्ट हमर सरीबो एति दिन पर कोन अब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हबो कि तू किछि जिंस हमको रिटर्न करिवो जहां किछि भी परफॉर्मेंस अछि से परफॉर्मेंस को सिक्योर करिवो दीटा जाको जिंस सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लेज देन देखो प्लेज भितरे की अछि अंकने होची पार्टीज टू प्लेज parties to pledge first hochi owner and the bailee in this case is called pawning clear bailee meaning the person who gives the goods is a bailer and the person who receives it is known as bailee बुझिला A pledge is a bailment of movable property. Please underline movable property. Ultimately, immovable property ro kiछि भी like जिक्र आसुनी. So pledge is always about movable property. Movable property. Clear? तो से कौन कोच द कांसेप्ट ऑफ प्लेज इज डेल्ट विद द अंडर सेक्शन 72 आंसर हैला इरेलेवेंट जिंस से तापर से कोच देखा हमरो गुटे केस लॉ इन महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर तो सुप्रीम कोर्ट रो डिसीजन कोन थिला इट वाज हेल्ड दैट इन अ प्लेज द प्लेज इज इन पोजेशन ऑफ एन एक्चुअल प्रॉपर्टी इन द गुड्स व्हिच ही इज एंटाइटल्ड टू डिटेन टू सिक्योर रीपेमेंट अल्टीमेटली से कौन कोची तीड़ा जगह बैंक थिला गुटे बैंक थिला एंड गुटे प्रोविडेंट फंड कमिश्नर थिला से प्लेज इन प्लेज इज एंड हैव स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स हैला जे किछि भी गुड्स जेस करछने जा पखरे प्लेज रखाइ छै गुड्स ता पखरे गुटे कोन स्पेशल राइट थिबो कोन राइट थिबो ना एंटाइटल्ड टू डिटेन टू सिक्योर पेमेंट माने व्हेनेवर द पर्सन इज माने से रिफ्रेन करछि मना करछि कि मु पेमेंट करबिनी तो पूरा राइट का ऊपर पड़ा आसीबो से गुड्स ऊपर पड़ा आसीबो माने जहां किछ भी गुड्स से सिक्योरिटी हिसाब रे रखिछि से गुड्स गुडा से सेल कर दे पारियो किबा कोन से थ्रेटन करि पारियो कि मु से गुड्स सेल करबेली कोइ ताकि कोन जहां किछ भी पेमेंट ताको बाकी अछि से पेमेंट से कर देबो तो डिटेलिंग द पेमेंट माने कोन व्हेनेवर ही इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम द पेमेंट से पेमेंट करियो मना कर दोछि तो ये कोन करियो प्रॉपर्टी ना सेल करि पारियो गुड्स गुडा को सेल करि पारियो Clear? This is the Supreme Court decision. Unlike a mortgage, a pledge does not have the effect of transferring any interest in the property in favor of the pledge. Delivery of goods is necessary to complete a pledge. Hela eda hochi important points.
माने आमे कहि दे परियानी कि आमे तोर ना ओनरशिप टा चेंज कर देबो कहि ओनरशिप टा चेंज करले हमर प्लेज रो पर्पस टा फुलफिल होनी से कोन एक्चुअली गुड्स टा दे देबो गुड्स रो डिलीवरी हेले आगा से जिंस कोन प्लेज हे चली हमें कहि परिबो क्लियर सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लेज प्लेज रे हमें देखिले एडा होची सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट एंड परफॉर्मेंस एडा होची मेरा फर्स्ट पॉइंट देन से होची प्लस एडा सबोळे मूवेबल प्रॉपर्टी आ होबो कोन actual delivery goods actual delivery of goods is required actual delivery of goods is required plus कोन होबो थर्ड जिंस होची जे भी अछि the person in possession of the security the person in possession of the security is having the right to is having the right to sell the property sell the security in case of non-payment of debt clear in case of non-payment of debt ultimately एतिक जिंस हमें पढलो दिस इज द समरी देन देखो आमे जानलो कोन बेलर बेली अछि से बेलर बेली रा ना चेंज हेछि बट अल्टीमेटली तांकर पर्पस ता कोन तो एबे हमें जाने कोन डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज सेक्शन 172 of the act defines a pledge to be bailment of goods as security for payment of debt or performance of a promise तो से कोन कहछि bailment of goods bailment रो मीनिंग कोन थिला whenever a bailer repeat करो bailer जे भी अछि से कोन goods दबो बेली को with the purpose of something which upon accomplishing माने पर्पस से जतरो सरी जीवो से एइदर सेटा बेलर को रिटर्न कर दबो न नले कोन करिया से जहां से डायरेक्शंस दबो ता हिसाब रे से कोन करियो डिस्पोज करिवो तो दिस इज बेलमेंट बट प्लेज रे कोन होची ना बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी जहां भी गुड्स से बेलमेंट हिसाब रे देछि सेटा डायरेक्टली कोन हे जिवो हमरो सिक्योरिटी हे जिवो क्लियर सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस तो दीडा जगह एलिमेंटेडी पड़ा आसला whereas section 148 provides that a bailment is the delivery of goods by one person to another person for some purpose किछि पर्पस थिबो बट एडी कोन खाली सिक्योरिटी आगा पर्पस upon a contract that they shall when the purpose is accomplished purpose सरला परे से कोन करियो ना रिटर्न कर दबो ना करियो डिस्पोज कर दबो so the basic point of difference between bailment and pledge is जहां भी गुड्स अछि सेडा रिटर्न हेबार पर्पस रे बेलमेंट ता होची बट एडी कोन होची सेडा सिक्योरिटी पर्पस रे रखियार होची तार पर्पस प्लेज रे हला दिस इज द की पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो की पॉइंट ऑफ डिफरेंस जदि हम लिखिया कोन लिखियाडी तो गुड्स बेलमेंट रे कोन हबो एंड प्लेज रे कोन हबो बेलमेंट रे हबो सेडा कोन goods are to be disposed of as per given directions goods are to be kept as security what security हिसाब रे रखिया पे दिया this is the key point of difference between bailment and pledge clear एबे देखिए हमें rights of pawning
The rights of pawnee are pawnee माने के लिखि दियो bailey. This is bailey. तो bailey ର rights कौन अच्छी किंबा pawnee ର rights कौन अच्छी. तो से कहूची provides that the pawnee may retain the goods pledge. Number 1 retain माने कौन से रखिबो. Retain the goods pledged not only for the payment of debt or the performance of promise but for the interest of the debt and all necessary expenses incurred by him in respect of the possession or for the preservation of the goods pledged. हेले से रिटेन करिवो से कथाटा हम बुझिलु बट कोन पे रिटेन करिवो देखो से कहिची गोटे होची से पेमेंट माने रिटर्न पाइबा पई सेकंड थिंग होची परफॉर्मेंस टा रिटर्न पाइबा पई थर्ड थिंग होची इंटरेस्ट रिसीव करिया पई पैसा देछि से प्रिंसिपल दे देले से गुड्स दे दबो कि नाही इंटरेस्ट भी ताकू दरकार इंटरेस्ट लेबा पई एंड जहां किछ भी नेसेसरी एक्सपेंसेस गुडाको जो अछि नेसेसरी एक्सपेंसेस भी हमहु रिटर्न करिबा पई एतिकी जिंस फुलफिल हेले आगा जे भी अछि से कोन करियो रिटर्न करिवो से गुड्स गुडा क्लियर तो एडी कोन हबो ना से कहूची फर्स्ट थिंग होची रिटेनिंग फर्स्ट राइट कोन करो रिटेनिंग ऑफ गुड्स कोन कोन पे फर्स्ट कोन कहूची पेमेंट ऑफ डेट payment of debt performance of promise of debt performance of promise तापरे कोन interest receipt टा हला तापरे होची necessary expenses clear chapter जिंस payment of debt performance of promise interest expenditure interest receipt आ कोन necessary expenses एतिकी जिंस से कोन रिटर्न पाइला पर आगा ता गुड्स जहां भी अछि से कोन करियो रिटर्न करिवो सिक्योरिटी टा एडा होचे हमर फर्स्ट राइट तापरे से कहूची pawnee is entitled to receive from the pawner extraordinary expenses incurred please underline extraordinary expenses incurred by him for the preservation of the goods pledged माने मनोहर से गुटे कार देछि ताको सिक्योरिटी हिसाब रे से कार रखिया पे ता पाखरे जागा नै बुझी पाछो क्लियरली सुनो एग्जांपल टा कार टा दिया अछि सिक्योरिटी हिसाब रे कार रखिया पे ता पर जागा नै से कोन करछि गुटे वेयर पोस्टी रेंट को नेला कार टा रखिया पे शेड टा तो सेडा पे किछि एक्सपेंसेस इनकर करिया पडियो तो जेतु किछि एक्सपेंसेस सेडी इनकर करिबा को पडुची देन कोन करियो से एक्सपेंसेस भी पॉनर से कोन करियो कलेक्ट करियो क्लियर सो सेकंड पॉइंट इज right to receive extraordinary expenses हैला which are extraordinary expenses for nature मध्ये से कहउछ माने एमति नै कि से लॉटरी टिकट टा किने वाली कोई पैसा आपको मांगे नै सेडा ही परियन हैला से कोन पे ना extraordinary expenses incurred कोन पे incur हिची incurred to preserve the goods pledged जहां किछि भी गुड्स से प्लेज करिगी रखुची से गुड्स गुडा को प्रिजर्व करिया पे जहां भी राइट अछि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर करची से जिंस रिकवर करिवार राइट का पाखर अछि पॉनी पाखरे देन देखो if the pawnee makes default in payment of the debt or performance at the stipulated promise हला से कोन कथि किछ भी डिफॉल्ट करला माने से पेमेंट करि पारलानी तो कोन हबो नेक्स्ट consequence होची or performance of the stipulated time of the promise in respect of which the goods were pledged जहां भी goods pledged हेई अछि the pawnee may bring a suit against the pawner से कोन करिया जे भी अछि से इधर से सिक्योरिटी रखि पारिबो नॉन आ गुटे राइट का पखर अछि कोन से केस फाइल करि पारिबो so this is a very important right माने से कोन देखो whenever the pawner defaults in repayment of debt defaults in
repayment of debt, repayment of debt, the pawnee has the pawnee has the right to the pawnee has the right to file a the pawnee has the right to file a suit file a suit against file a suit against pawner. Clear? ता ऊपर ये कौन कर परियो चाहिले केस करि परियो. Clear? Then se kochi dekha upon the debt or promise and retain the goods pledged as a collateral security. Se kon kochi retain the goods pledged as a collateral security or he may sell the things. Se rakhi paribe seta collateral mane against the security aga mane mortgage ku jaha bhi ame koch. Second thing hoche se sell kar de pariyo directly. Third thing hoche se case kari paribo. Se kon kari paribo se koch on giving the pawnee a reasonable notice of the sale. अच्छा से जो कार टा security हिसाब रे रखछ 3 लाख रुपीस ताको रिटर्न करियर अछि से करूनी हला इंटरेस्ट पेमेंट दोनी किछ भी दोनी तो से कोन करियो नोटिस दबो कि आई एम गोइंग टू सेल योर कार रीजनेबली ताको जणे दबो कि त कार ता सेल करछि कहि जणेला पर आगे से कोन कर परियो सेल करि परियो. क्लियर? If the proceeds of such sale are less than the amount due in respect of the debt or promise माने if proceeds of such sale जो भी सेल रो प्रोसीड्स अछि सेल कर देला सी अच्छा सेल करला पर कोन हला ताको सेतिकी अमाउंट रिकवर हे पानु जदी कम अमाउंट रिकवर हला तो कौन होगा less than the amount due in respect of the debt or promise the pawnee is still liable to pay the balance. If the proceeds of the sale are greater than the amount so due the pawnee shall pay over the surplus of the pawnee. This is a very important point हैला बहुत important case law ही पारे से कौन कोच देखा. So whenever the proceeds of sale हो से ना revenue और meaning भी लिखि दोछ revenue from earning revenue from selling the revenue from selling the security that is pledged. The proceeds of the sale is of two types. Hela proceeds jaha bhi achi proceeds is less than amount due माने कोन ताको कम पड़िया the pawnee is liable to pay the remaining amount बुझी पालो ना नहीं pawnee जे भी अछि से remaining amount टा पे करिया पई बाध्य तो proceeds टा बेसी आसिला तो कौन होबो pawnee जे भी अछि सी तो pawnee is responsible to repay the remaining amount बुझिला जहाँ remaining amount अछि कि कोन एक्स्ट्रा अमाउंट जहाँ भी हमें कहि पारे एक्स्ट्रा अमाउंट अछि से जिनसडा रीपे करिया पे कोन बाध्य. क्लियर?
तो से अमाउंट को से कौन कहूँ देख से कहूँ सरप्लस सरप्लस माने कौन जहाँ भी आमर माने मिनिमम अमाउंट थी एक्स्ट्रा अमाउंट को हम सब कौन कहूँ सरप्लस कहूँ तापर देखो रिटेनिंग द गुड्स बाय pawnee section number 174 provides that the pawnee shall not in the absence of a contract to the effect retain the goods pledged for any debt or promise other than the debt or promise for which they are pledged but such contract in the absence of anything to the contrary shall advance by the pawnee देखो तमे बुझी जाइथिबो ऑब्वियसली हैला से कोन कहूची जो जिंस पई से प्रॉमिस करी की प्लेज करछि खाली से जिंस पई आगा से गुड्स रखि परिबो नॉट एनीथिंग मोर देन दैट तार अधिक से किछि हेले का पई प्रॉमिस करी की से रखि परिबन माने जदी से जिंस रो प्रॉमिस टा एकम्प्लिश हे गला कॉन्ट्रैक्ट टा सरी गला देन से आउट जिंस पई से गुड्स प्लेज करि परियो बट से कंटिन्यू करबन विल अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल मो जिंदी से कंस्टेंट एग्जांपल टा देछि कार्ड टा से रखिछि 3 लाख अमाउंट टा रीपेमेंट करबो तो 3 लाख रुपीस रीपेमेंट कर देला सी आउट रे लोन लेला 2 लाख रुपीस पे तो से 2 लाख रुपीस पे से माने सेटा रिटेन करी की रखि दे पारियन अनलेस गोटे नुआ कॉन्ट्रैक्ट हेची अगेन से 2 लाख रुपीस पे से कार आगा फ्लड होची हले कहि के बुझि पालो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हे गिरी आउट रे पुनी कॉन्ट्रैक्ट हेले से सेटा कंटिन्यू करि पारियो बट कॉन्ट्रैक्ट न थाई गिरी से सेटा कंटिन्यू करि पारियो दैट्स व्हाट इज टेलिंग सर खाली एतिका कोच तो एतिके कहला पर से गुटे जिंस कहला देखो बट सच कॉन्ट्रैक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी शैल बी presumed made by the pawnee माने प्रेजम्पशन एथिरे कोन थिबो जानछ ना सब्सिक्वेंट एडवांसेस माने जहां भी pawnee जे भी अछि से किछि एडवांसेस देथिबो अली कहले से जिंस को एसोसिएट हेगी से जिंस को कोलैबोरेट करिकि नुवा कॉन्ट्रैक्ट हबो क्लियर माने से अल्टीमेटली कोच कोन नुवा कॉन्ट्रैक्ट हेले नुवा ओथरे प्लेज टा स्टार्ट होई पारे क्लियर एबे देखो प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट हैला एजेंट जे भी अछि से केमती प्लेज करि पारे section 178 provides that where a mercantile agent is with the consent of the owner in possession of the goods document of the title of goods authorized by the owner of the goods provided the pawnee acts in good faith and has not at the time of the pledge notice that the pawnee has no authority to pledge देखो किछि भी नहीं फर्स्ट हमें मर्केंटाइल एजेंट रो मीनिंग दा बुझिबा मर्केंटाइल एजेंट रो मीनिंग होछि एन एजेंट ना जे भी एजेंट अछंदी से एजेंट कोन अली कले इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस जनरली गुड ऑर्डिनरी बिजनेस सेतरो कैरी आउट होची तार अथॉरिटी अछि एदर सेल गुड सेल कर दे पारिबो नॉल कोन करे से कंसाइन करि पारियो गुड्स ता माने प्रिंसिपल कोडी गुटे फॉरेन कंट्री रे रहउची रे हला तार गुटे एजेंट अछि जे ता पे काम करची तो से कोन कर पारियो गुड्स ता कागो दबो नले कोन गुड्स ता कोन सेल करिवो ऑब्वियसली ता काम सेतिकी तो फॉर द पर्पस ऑफ सेल और टू बाय गुड्स और टू रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ द मनी तीनटा पर्पस से गुड्स दे पारे हला ता पाखरे कोन बहुत किछि स्टॉक अछि स्टॉक माने मनर से मोबाइल फोन जाको बिकुछ हला से मोबाइल फोन बहुत स्टॉक अछि से कोन करियो इधर का गुड ब्रांच को दबो कि सेल करली कहि गिरी नले कोन करियो का गुड डायरेक्टली सेल कर दबो नले कोन करियो कोडी सिक्योरिटी हिसाब रे रखिबो तीनटा जिंसा तो हेई पारिबो सो से कोन कहै मर्केंटाइल एजेंट माने एमिति लोक जे कि आउ जणा पे काम करछ तो मर्केंटाइल एजेंट ता केमिति प्लेज करबो से कहछ केमिति प्लेज करिया देखो in possession of goods or the documents of the title of goods first thing होची ता पाखरे गुटे वैलिड डॉक्यूमेंट थिबार अछि कि मो पाखरे जे भी ओनर अछि ओनर ऑफ द गुड्स अछि से ताको गुटे डॉक्यूमेंट देथिबो कि he is entitled to माने कोन सेल करि पारिबो कहिके हला कि से फेक नै से होची मो लोक तो से करि पारिबो जहा हेले भी सेडा गुटे टाइटल ऑफ गुड्स थिबो when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be valid as if he were expressly authorized as the owner of the goods माने जदी ता पाखरे गुटे वैलिड डॉक्यूमेंट अछि तो वैलिड डॉक्यूमेंट थिले से कोन सी ओनर ऑफ द गुड्स हेले हमें कहि परबो क्लियर देन से कोन कहूची टू मेक द सेम प्रोवाइडेड द pawnee acts in good faith से कोन करियो जे भी pawnee अछि तार गुड फेथ हो माने जे ओनर सहित
and has not at the time of pledge noticed that the pawners has no authority to pledge. माने एमिति नथियो कि पाwners जति कहथे नाइ नाइ ताको किछि संपर्क नै कहला परे लेले से जति बिकि दोछि कर दोछि हला जति ता से ताको पडुनी देन ए जिंसडा अप्लाई हबनी तो अल्टीमेटली देखो से गोटे जिंस कहला कि सी वैलिड सर्टिफिकेट देथिबो कि ये ओनरशिप माने राइट अछि एली कहि तो ओनरशिप राइट अछि से केतळ कहि जति लास्ट पडथि सेतळा कहि ना तो सेकंड पॉइंट इररिलेवेंट तो केबे प्लेज करि परिबा लेखो when when the pawners assigns pawning when that assigns pawning the possession of goods along with documents to title of goods clear documents to title of goods so this is a pledge by mercantile agent देखो ultimately से गुट्टा का जिंस से कोच से गुट्टे लाइन आगा तमु रेलेवेंट तो सेति के आगा तमे लिख फर्स्ट टू ऑब्वियस करियो सब जिंस कंप्रिहेंसिव मैनर रे लिखिया पे मु रिपीटेडली से जिंस कहूची काहेकि ए गुट्टे जिंस आगा सेव करि परिबो फ्रॉम द हेवी सिलेबस वी आर हैविंग बुझिला तो एडा एबे एमती अछि फाइनल रे तमको आउरी बहुत किछि पढिबा पड़िबो अगेन ए जिंस रो इंक्लूजन अछि एंड ए जिंस सहित सहित तम अलगा जिंस भी पढिबा पड़िबो एंड अगेन आउट थर्ड जिंस कहूची लॉ जदी एबडो फेवरेट कर देलो तो सेव हे जिवो काहेकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यू हैव सम फार्मूला केमती करिके फॉर्मेट करिके जहां करिके डिराइव करबो गुटे प्रॉब्लम न भल लाइले आउट प्रॉब्लम भल लागे बट लॉ जदी पूरा पूरी बिजार हेओछ फाइनल रे कमर्शियल लॉ पढिबार अछि अगेन लॉ रो पूरा जहां किछ पढियार अछि डीटी रो प्रोविजन पढियार अछि जीएसटी रो अलगा प्रोविजन पढियार अछि कॉस्ट ऑडिट रो अलगा प्रोविजन पढिबार अछि सो दीस आर ऑल लॉस बुझला तो लॉ लैंग्वेज दा लॉ केमती इंटरप्रेट करियर एबे ट्राई करो कि तासे तो टिके फेवरेट हे जिवो क्लियर फाइन pledge in a voidable contract section number 178A provides that when the pawner has obtained possession of the goods pledged by him please underline has obtained कौन करछि ना गुड्स से प्लेज नहीं ता पाखु गुड्स पहुंचेला तबे कौन हला देखो by him under a contract voidable under section 19 or 19A but the contract has not been rescinded at the time of pledge the pawnee acquires a good title to the goods provided he acts in good faith and without the notice of the pawner's defect of the title तो से कौन कहछि फर्स्ट होछि से गुड्स ऑब्टेन कर देला सेकंड से कहछि किछि भी सेतरे voidable elements अछि आमे देखिथिलु फर्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर रे आमे कहथिलु कोन voidable हेबा पे को जिंस हेबार अछि माने कोन किछि इलीगल एलिमेंट थिबो ऑब्जेक्ट ता खराब थिबो कि कोन कंसीडरेशन नथिबो फ्री कंसेंट नथिबो जहां भी पढथुलु क्लियर तो सेति किछि एलिमेंट्स अछि बट कोन हिछि द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन rescinded at the time of pledge माने ए जिंसलो किछि इंटरफियरेंस ता कॉन्ट्रैक्ट हेबा टाइम रे किछि हेनी माने ए जिंसरो जहां भी जानि बार दरकार इंफॉर्मेशन दा से कॉन्ट्रैक्ट हेबा टाइम रे हेनी द pawnee acquires a good title to the goods हला द pawnee acquires a good title to the goods माने जेतोल से गुड्स ता दिया होतिला से pawnee को से टाइटल ऑफ ओनरशिप ता आराम से दिया आइला माने से डॉक्यूमेंट ता दे देला कि दिस पर्सन इज eligible to be a owner of the goods कहिके provided he acts in good faith without the notice of the pawner's defect of the title हला पॉनर ता जानि नि कि सेडी टाइटल ता डिफेक्टिव अछि एली आ कोन ए लोकटा सतरे जेन्युइन लोक हेले कोन से कहयो चाहछि एडी से जिंसटा केतळ voidable ही पारे जानछ ना जदि से voidable एलिमेंट्स ता दी जण भितरे का होले जणा थिबो जदि दी जण भितरे काहा होले जणा नै तो सेडा voidable ही पारे हेले voidable केबे ही पारिबनी ना दीडा जिंस जेतळ ता पाखरे गुड फेथ थिबो माने से गुड फेथ रे एक्ट करथबो सेकंड थिंग होछि आ पॉनर पाखरे से नोटिस ता नै कि माने से जिंस रे किछि किछि डिफेक्ट्स अछि कहिके क्लियर अल्टीमेटली क्लियर के ध्यान दे कि सुनिबो आराम से गुट्टे थर रे बुझे पड़ जबो देखो एडी कोन कोछि से राइट डाउन ऑब्टेन पोजीशन फर्स्ट ता पोजीशन बाकी ऑब्टेन पोजीशन ऑफ गुड्स obtain possession of goods plus acquires good title to goods acquires good goods acquires good title to goods plus acts in good faith
does not notice, owner does not notice defective title. Hello. Does not notice defective title. Yeah. Owner doesn't notice defective title. Clear? अब देखो लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ द ओनर. Obtain possession of the goods plus acquires good title to the goods, acts in good faith. Owner does not notice defective title. Owner does not notice defective title. है ना? Limited interest of the owner देखो, where a person pledges goods in which he has only a limited interest. Please underline limited interest. माने कौन? तार ownership टा partially दिया है. तार ownership टा partially दिया है. The pledge is valid to the extent of that interest. माने मनर गोटे कार टी अच्छी. Again से कार एग्जांपल हमें नेच नेबा. तो 3 लाख रुपीस pledge टा दिया है. तो जे भी ओनर अच्छी ये पूरा पूरी ओनर नहीं, ये आ तार बड़ भाई मिसी के से कार टा रखुचंदी. तो आर केते पार्ट था तो 50% ऑब्वियसली. तो कार टा बिक्री जहां भी आसीबो, लाइक से देखियो रीसेल वैल्यू देखिला कोन 2,50,000. तो 2,50,000 हाफ केते हला 1,25,000. तो 1,25,000 जाई ये प्लेज करिबा हला, ये प्लेज करि परियो. 3 लाख 4 लाख रुपीस में ये कार टा प्लेज करिबानी. आ पाखरे कोन 1,25,000 राइट अछि. तो 1,25,000 भितरे जदी ए किछि हला अमाउंट और लायबिलिटी अछि, देन ओनली ही कैन प्लेज द कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? दिस इज लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ द ओनर. Suit against wrongdoers देखो, section 180 provides that if a third person, please underline third person जे भी involve है अच्छी, wrongfully deprives the bailey use a portion of goods, से कौन करियो? जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती ताको deprive करियो. deprive माने please माने होची prevent the bailey of the use of possession of goods bail or does them any injury. The bailey is entitled to use such remedies as the owner might have used in the like case if no bailment had been made, and either the bailier or the bailey may bring a suit against a third person for such deprivation of the injury. Comedy जिनसे एडी कौन लिखा है? bailier अच्छी, bailey अच्छी. bailier bailey को right देला goods use करिया पे किंबा security हिसाब रे रखिया पे. हेले third person जे भी अच्छी सिया आसी की इंटरफियर करछि, सिए ताको मना करछि नाइ जोडा कर पारु. मे बी से सासु भी हेई परियो बेली रो, कि से बेली रो बॉयफ्रेंड की जहां भी गर्लफ्रेंड की फियांसी जहां भी हेई परियो, से कोछि नाइ तो एडा सिक्योरिटी हिसाब रे रखि पारु. ये कोन तू के मते कयो लिटरली तू के तो से कयो तुम कथा सुनो न ठीक अछि कयो से काच भांगी दो. हैला जदि से ग्लास माने कार रो काच भांगी दबो तो अल्टीमेटली कोन हबो? ये कह तोते तो मु कहितली तो कथा सुनिनी, आडी तो जदि इंजरी करू मु कोन पे साइलेंट रह, तो ये ले केस कर देबो. तो बेलर जे भी आसे से कहियो मो सिक्योरिटी काई ना इंडिया अछि, तो से बेली ऊपर रागिबो. बेली कहियो नाही मु तो केस करछि, तू भी केस कर दे, से आ बाहर आसियोनी. हैला तो सी भीतर पड़े जेल भीतर. हैला एमन दि जण थी. तो थर्ड पर्सन जदि इंटरफियर करिवो अल्टीमेटली कौन हबो ना किछि इंजरी करछि किबा कोन से जदि प्रिवेंट करछि, से दीडा जिंस कहिछि देखो, प्रिवेंट्स थर्ड पर्सन प्लस any injury prevents or does any injury then the bailey or bailer pony or owner can file a suit against the third person. ठीक है, से थर्ड पर्सन पर से कौन कर परियो केस करि परियो. आ जदि से कहियो नाइ नाइ भूल हे तळ मोर किछि ये हे गेछि प्रॉब्लम हे गेछि
तो से केस जदि एमती होउछि कहले एडी कोन हबो कि बेलर अछंती जे बेली और बेलर जे अछंती से हम करिवे तांके रेस्पेक्टिवली गुटे इंटरेस्ट क्रिएट करिवे माने कहबे ठीक अछि ताको एते जे हमें रिलीफ देई पारिबा till this portion of time or this portion of interest we can provide some relief माने हमें कहि परिया कोन से भूल रे कर देला से कहे कि नाइ नाइ भूल हेला सॉरी कि भूल जानि पारलिनी मु इंदी इंटरफियर कर देली तो मते एबे टिके हेल्प कर मु जेल रे रहियली कले कि न तू बा न हेले है से ना मते जेल रू काट दे तो बेली बेलर जे भी अछंती तांका ने मिसी कि कोन करिवे ना कहया हो ठीक अछि से कोन राती रो नशा ताको जाय नथ्यो कि कोन ओडे इंटरफियर कर देला कि कोन कर देला ठीक अछि तमे लाइक ठीक अछि रिलीफ प्रोवाइड करिया तो तांके भितर कोन करिया बेलर कहया कोन नाइ 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 मोर कार्टा नुवा कार्टा मो सिक्योरिटी हिसाब देछि सी ग्लास भांगी देला तो सी अमाउंट हमको दबा पड़े तो ये कहया कोन हां मु आले बहुत हैरान ही आ लागी तो दे जण मिसी कि गुटे एग्रीमेंट को आसीबे कि वी नीड सम अमाउंट फ्रॉम हिम तो एतिकी अमाउंट हमको देई दे आमे तो ऊपर कोन सूट जहा भी केस अछि आमे छडा कोन रिमूव कर तो दे जण मिसी कि जहा भी एक्टिवली इंटरफियर करेगी तो बेलर एंड बेली actively Baylor and Bailey actively contributing to a decision. Baylor and Bailey actively contributing to a decision can be decision जहाँ भी अच्छी सेटा कौन होगा shall be implemented clear तो decision जहाँ भी अच्छी सेटा कौन होगा implement कीजिए clear fine एडा होची हमरा कोन प्लेज पूरा पूरा प्लेज चैप्टर तो प्लेज चैप्टर बेसिकली छिनो अगेन रिवाइज कर दोची से अल्टीमेटली कोन होची हमको जनरेट गुटे सिक्योरिटी किबा गुड्स ऑलवेज प्लेज ता कोन मूवेबल ना इमूवेबल प्रॉपर्टी पई मूवेबल प्रॉपर्टी पई ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी पई तो मूवेबल प्रॉपर्टी जतलो हमें सिक्योरिटी हिसाब रे दोछु सिक्योरिटी हिसाब रे देला कोन होची दीडा जिंस पे हमें दोछु सेडा भलसे सुनो पेमेंट ऑफ डेट पई नले कोन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो दीडा जिंस हैला परे कोन एक्चुअली देयर इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड the person is in the possession of the security is having the right to sell the security in case of non payment of debt जहां किछ भी पोजीशन ऑफ द सिक्योरिटी अछि सेटा कोन हबो राइट ताको दिया हे जिवो जदी ताको कोन सिक्योरिटी टा से माने नॉन पेमेंट करछि तो राइट अछि ता पखरे सेल करिया पई तो रिटेनिंग ऑफ द गुड्स कोन कोन जिंस पई हे परिबो एडा हम कहितली केस ला आसीबो कहिगिरी हेले से भी होची डेट रीपेमेंट सेकंड थिंग होची प्रॉमिस रो परफॉर्मेंस थर्ड थिंग होची इंटरेस्ट रो रिसिप्ट एंड फोर्थ थिंग होची नेसेसरी एक्सपेंडिचर रो पेमेंट से एतिकी जिंस करले जाई कोन हबो से पेमेंट से सिक्योरिटी टा रिटर्न करबो एतिकी हैला तापर हम देखिलु कोन ता पखरे जदी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किछि से इनकर करछि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर करछि फॉर द पर्पस ऑफ रिटेनिंग माने से जहां भी सिक्योरिटी दीछि सेडा रिटेन करिया पे जदी से किछि एक्सपेंडिचर इनकर करछि देन सेडा भी से ताको मांगी पारिबो क्लियर then whenever the defaults repayment of the debt जदी से डिफॉल्ट करूची तो ये either security टा सेल कर दे पारियो नले कोन केस टा फाइल कर दे पारियो एंड कॉन्ट्रैक्ट केतळ voidable ही पारियो जेतळ को there is a possession of the goods आ गोटे कोन ता पाखरे टाइटल ऑफ द ओनरशिप अछि थर्ड थिंग होची से गुड फेथ रे एक्ट करबो फोर्थ थिंग होची पॉनर डज नॉट नोटिस डिफेक्टिव टाइटल हला पॉनर किबा पॉनी काहा को हेले सेत्रे थिबा डिफेक्ट्स गुडा को जणा पड़लानी एतिकी जिंस हेले जाय के से कोन voidable कॉन्ट्रैक्ट ता हे परिबो लिमिटेड इंटरेस्ट रे कोन होची ना जे भी पॉनी अछि ता पाखरे जेतिकी राइट अछि माने जदी कार ता हाफ हाफ रेट रे किनि चंदी तो जा पाखरे जेतिकी राइट अछि से सेतिकी अमाउंट पे आगा से कोन सिक्योरिटी हिसाब रे प्रोवाइड करि परिबो सो एज सिंपल एज दैट ट्राई करिवो बोले एक्टिवली जेतळ को सुनी के लिखि दबो संगे संगे तो सेडा बहुत जल्दी मन रहि जिवो एंड तमे जानि परनो बट अल्टीमेट जिंस कोन हली कहले तमे एमिति टिके टिके माने लाइक 5% डेली कंट्रीब्यूट करले सेडा केति की हबो तमे जानि परियनी इंपैक्ट ता तमे जदी गुटे दिन पूरा की गुटे वीक पूरा 10 आवर्स 20 आवर्स पढले भी 20 आवर्स पढे पिला ने भी अछन तमे जानथिबो 20 आवर्स 10 आवर्स पढले भी सेति की इंपैक्ट रहबनी काहेकि जहाँ भी हमें जानछु कंपाउंड इफेक्ट रो फार्मूला कंपाउंड इफेक्ट भितरे जनरली कोची वर्ल्ड भितरे कोन होची ना हमें प्लेइंग कार्ड्स गुडा जते स्प्रेड करिकि रखुछु तो गोटे कार्ड पकिला को काहे कि सेटा अल्टीमेटली लास्ट पर्यंत जाउछ आ लास्ट पर्यंत जाईकि से लास्ट कार्डटा पड़ला हमें देखियो कोन से फ्रीक्वेंसी टा बहुत अधिक थाउछ माने बहुत स्पीड हेगी जाउछ माने हमें जदी धीरे पकिलो धीरे 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 जेबो बट लास्ट को गला को से स्पीड टा अधिक हेजिबो काहे कि दिस इज द फैक्ट दैट इज रनिंग इन द वर्ल्ड
माने आमे जदि 1% डेली इंप्रूव करबो जहां भी स्किल तमे नियो 1% डेली इंप्रूव करी करी के जाउछ ना तो एट द एंड ऑफ द ईयर तमे 365 टाइम्स बेटर हे जेतिबो तमे जानि परिबो एंड 100% बेटर हेले जदि हमर एतिकी इंपैक्ट 365 टाइम्स बेटर हेले केति तो म कहूची आज एतिकी पढलो एतिकी आगे भल से पढ एतिकी सुनलो जहां भी सुनचो से टाइम रे एक्टिवली सुनो एमति नै कि मु फास्ट तो सुन नथिले एबे सुनै कोन नै से 5 मिनिट्स से 10 मिनिट्स से 15 मिनिट्स 20 मिनिट्स से पोर्शन पर्टिकुलर तम रही जीव ना किए जानछि सेडा एग्जाम भितर पळा आसो से पर्टिकुलर केस ल पॉइंट का तम मन पड़ जीवो एमति बहुत थरे म सहित हिच हैला सो दीस आर द स्मॉल पॉइंट्स जोडा कि मते आज जे लागुथिला बहुत इररिलेवेंट बट ए जगह का रिलेवेंट बुझिला तो एबे देखो एजेंसी एजेंसी मु आगुड कहिथिली एजेंसी इज अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक तमरो प्राय 50% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर आस्क्ड फ्रॉम एजेंसी हैला मु कोन पे इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट मार्क करछि ना अल्टीमेटली सब जिंस हम लेखुछु बट तमे हाइलाइट करि रखिथिबो जेतरो तमे पढिबो तमे कोन लिफो एक्सक्यूज मी लिफो ऑर्डर रा हमें पढिबो फिफो नै फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नै लास्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट रो देखि देखि जिवो सो एजेंसी रो मीनिंग कोन एजेंसी रो मीनिंग तमे अल्टीमेटली जानिथिबो कि एजेंट रो जहां भी काम अछि तो देयर इज अ पार्ट ऑफ एजेंसी देयर तो एडा को चैप्टर भितर होछि ना चैप्टर 10 एडा गुडथरे क्वेश्चन आस्थिला काई चैप्टर जनरली कार थाउनी काई इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वी हैव चैप्टर्स प्रोविजंस सब प्रोविजंस एंड amendments etc से सब जिंस थाउछि ना तो सेक्शन 182 provides that an agent is a person agent माने किए देखो agent is a person agent obviously देगी employed to do any act employed to do any act for another or to represent another in dealing the person माने agent माने किए person employed person employed to do any act or represent another in dealing in third person dealing with third person clear तो एजेंट माने होची पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट और रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पर्सन से किछि भी का पे जदी एजेंसी काम उडा करछि तो दैट पर्सन इज नोन एज एजेंट आ एजेंट का अंडर रे रहउछि प्रिंसिपल क्लियर एडी आसले प्रिंसिपल हमर agent is a person employed to do any act or represent anything with the third तो प्रिंसिपल माने होछि the person for whom such act is done जा पई एजेंट काम करछि is known as principal principal माने कि person who instructs the person who instructs the agent so एडा होची हमर प्रिंसिपल provisions regarding agent देखो a person may become an agent if he is of the age of majority माने माइनर के बेले हे पारिबने हम पढ़थिले माइनर केस रे भी he is of sound mind पागल नथिबो भलो लोक भलो लोक एटा कोन एते जातो मु गछ बने रोचे से जो ड्राइंग रे गछ हैला भलो लोक एटा ने एटा बड़ लोक appointment of agent किछि पैसा दरकार नहीं हां I don't know किछि पैसा दरकार नहीं हले अबे जदी के एजेंट थिबो से कहया के कहला दरकार नहीं करे पर काम पैसा दरकार हला and the authority of an agent may be expressed or implied एडा वगैरह लिख पारे बेसी बड़ हैला expressed or implied माने कोन either से एजेंसी फंक्शन जहां भी अछि से एक्सप्रेस करबो डॉक्यूमेंट हिसाब रे माने से कहयो कि एजेंट जे भी अछि मो पय एते दिन पय काम करियो एते की मास पय काम करियो एते की गुड्स पठेबो सब जिंस से लिखि पारिबो नले इम्प्लाइड माने जदी से कहै छी कार रो तो केयर नबो तो कार केयर नबो से गुटे गुटे जिंस कहयो कि तू धोयार अछि खरा न पडलाले शेल्टर कर अछि वर्षा रे तू शेल्टर कर अछि इन जिंस जे से कहयो कि एवडो सब कोन इम्प्लाइड मीनिंग तो एडा कोन इधर एक्सप्रेस हे पारियो आ इम्प्लाइड हे पारियो क्लियर तो प्रिंसिपल जे अछि प्रिंसिपल के तमे न देखि कहि देबो दरकार
फर्स्ट थिंग होची मेजर तापरे बड़ लोक मेजर तापरे साउंड माइंड देन किछ पैसा दरकार नहीं हां हला no consideration required no consideration required so agency may be expressed or implied clear expressed or implied चारटा का जिनस प्लस प्लस करके लिख दो आम इन पाठ पढ़ू तो लगे कि कौन पे किए टॉन्ट मारछ तुम तो बड़ लोक पचारियोनी हला सो दिस इज प्रिंसिपल एक्चुअली स्कूल जे थिले समस्त इंडिया कहउथिले स्पेशली जो हमरो लाइक कैथोलिक स्कूल रे प्रिंसिपल गुडा मोर जने सेंट विंसेंट कॉन्वेंट स्कूल सेडी रो जनरली प्रिंसिपल माने एग्जिस्ट हेकी था जने से माने कि बड़ लोक भल लोक पैसा किसी दरकार नहीं कहे बट फीस बहुत हाई फीस टा हाई तांको पैसा दरकार नहीं दैट एवरीथिंग गोस टू चैरिटी एवरीथिंग गोस टू जीसस क्राइस्ट सो सो कॉल्ड सिंती कथा जाक तो मते प्रिंसिपल कहले से प्रिंसिपल आगा मन पड़छ तो सेक्शन 187 डिफाइन्स द टर्म एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी देखो ए अछि आमे बारंबार सेटरो लाइक वर्ड्स पढ़थिल बट मीनिंग कोडी हमको प्रेस्क्राइब नै नथला एडी से कोन कोच देखो एन अथॉरिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस when it is given by words spoken or written किछि भी वर्ड्स लेखा आइथिबो किछि भी वर्ड्स कहउथिबे से वर्ड्स गुडा को देखि किछि अथॉरिटी होछि माने अ पर्सन इज ऑथराइजिंग कि तू एजेंट जे भी हिच मोर तू एति एति काम कर से वर्ड्स रे कहउछि किबा लेखि के कहउछि तो दिस इज एक्सप्रेस अथॉरिटी हला an authority is said to be implied when it is to be inferred please write down concluded from the circumstances of the case things spoken or written or the ordinary course of dealing may be accounted circumstances of the case माने implied meaning ताको न कहि कि से बुझि बार अछि से कहियो मो घरटा बिकुछि एले कहले से कह चाबी बिकियो गे एले पचरियो गे नाही तो चाबी तो दबो आगा ना तो एडा कोन हमरो implied अथॉरिटी किबा implied delivery टा अगेन हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट रे पड़े तो बट ये कोन ना जदी घर भीतर फर्नीचर टी अछि हैला फर्नीचर टा अछि सेडा से बिकिबो ना नै किन हम जानिबा से लेखि के जेते कहबो कॉन्ट्रैक्ट भीतर हेछि कि फर्निश्ड होम टा हम तुमको बिकिबो किबा से कहिछि कोन नॉन फर्निश्ड होम टा हम बिकिबो से कहिछि किबा लेखिछि दिस इज नोन एज व्हाट एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी क्लियर पूरा भल से बुझा से कहछि ए owns a shop in Serampur amara Berhampur tara Serampur himself lives in Kolkata and visiting the shop occasionally the shop is managed by B and he is in the habit of ordering goods from C in the name of A for the purpose of the shop and of paying for them out of A's fund with A's knowledge B has an implied authority from A to order goods from C in the name of A for the purpose of the shop किछि नै ए बी सी डी ई एफ जी से सिखोनी से कहछि कोन गुटे मनिसा नै गुटे लोक अछि हला से लोकर शॉप अछि तो से कहछि कोन जहा भी किने अछि किने की सेल कर अछि से जिंस तू देखिबो सेल करेडा मु बुझबी किने की आनिबाडा तू देखिबो स्टॉक की रॉ मटेरियल जहा भी तो से लोक जे भी अछि से कोन ताको गुटे क्रेडिट कार्ड दे देछि कि मोर एडा क्रेडिट कार्ड ता देखि कि तू सेल कर लाइक सॉरी बाय करे तो से कोन सब बडे ऑर्डर करला को ताको पचरियो कि कहियो कि अनलेस एंड अंटिल ओटीपी डे से कहयर अछि हला तो परमिशन तो सब बडे दरकार नै ना से तार पैसा रे से नबो आगा तो एडा कोन हला हमरा इम्प्लाइड अथॉरिटी हला माने से जदी कहउछि कि मो पय तो स्टॉक आन दे तो सब बडे से पचरि नै कि मु स्टॉक आनी कि पैसा तमे दबो कि कोन आली को से सेति की अमाउंट इंतजाम रे से कर देथबो दिस इज इम्प्लाइड अथॉरिटी क्लियर तो से एग्जांपल जहां भी कहले मु कहि देली तापर से कहउछि बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पर्सन एनी पर्सन मे बिकम एजेंट बट no person who is not of the age of majority and of sound mind can become an agent so as to be responsible to his principal according to the provisions in that behalf. से अल्टीमेटली कोच कोन एजेंट के हे पारियोनी जे कि प्रिंसिपल जदी माइनर नै एजेंट केने माइनर हे पारियो हैला तो प्रिंसिपल एजेंट रो रिलेशनशिप हमर स्कूल रे चलतिला किंदी तो जदी देखे आज मते आंसर शीट रे तो टिके आंसर थोड़ा कहि देबो मो बर्थडे होबो मो बर्थडे रे तते धरि छी हला एडा होय हमर प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप ता हमरा इन चलतिला तो माने जे तो माइनर माने
तो माइनर मन तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करन जो बड़ होला पर लोक कहे कि देखे तू मते जदी कॉन्ट्रैक्ट दबु तो हमर सर्विस रे मु तुमको परे कोन डिस्काउंट देबे तो एडा चलछ एडा कोन पे चलछ बिकॉज़ दे आर मेजर आ तांकर साउंड माइंड अछि हैला तो से कहू प्रिंसिपल एंड एजेंट के ले भी माइनर हे पारे एडे लिखि दियो नेदर प्रिंसिपल nor agent can be minors clear principal agent भी minor है पर clear section 184 provides that as between the principal and third person principal or third person any person may become an agent but no person who is not a majority and a sound can become an agent so respond to principal according to the provisions that we have section 185 provides that no consideration is necessary to create agency हला एडा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट से को कासे थिबोनी एजेंसी माने जनरली एजेंसी ला का हिसाब रे होची जे की देखो बहुत चिन्ना थिबो हला आ कोन जे की रिलेटिव थिबो कि फैमिली मेंबर्स भितरे जे भी होचन तांको भितरे कोन प्रिंसिपल एजेंट रो रिलेशनशिप थाउच काहे कि बाहर लोक की कंसीडरेशन न थाए कि काम करियो कि काम करियोनी तो सबले कोन जनरली तांको भितरे थाउचन तो कंसीडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर एजेंसी एडा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट Section 188 provides that an agent having an authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act. माने कौन an agent having authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act. हला every lawful thing जति की भी lawful thing अछि सब जिंस से act under रे कोन माने जदी दरकार छेले कहले से सब lawful thing initiate करि पारे जदी तार लॉ भितर अछि कि से केस करि पारे तो से केस करि परिबो जदी सेडा माने लाइक इंटरेस्ट एतिकी अमाउंट डिराइव करे अछि तो सेतिकी अमाउंट डिराइव करि पारे तो जहां भी हे पारे an agent having an authority to carry on a business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose or usually done in course of conducting a such business माने से कहू जनरली जहां भी रूल्स एप्लीकेबल अछि सेडा एजेंट को भी एप्लीकेबल अछि अंडर द आइज ऑफ लॉ जहां भी प्रिस्क्राइब करछि सेडा क्लियर Section 189 provides that agent's authority in an emergency देखो एडा important point कौन बोझे सी emergency case रे agent कौन करे according to this section an agent has authority to in an emergency to do all such acts जहां भी से करि परियो for the purpose of please underline for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence माने general circumstances in his own case under similar circumstance देखो एडा ऊपर केस लास्ट थिला मते बहुत भल से मन अछि पास्ट एग्जाम क्वेश्चन एडा तो से कहूची कोन जे भी एजेंट अछि एजेंट को प्रिंसिपल पर्टिकुलरली कया कथा नाइ कि मोर लॉस हेबडू तू मते बंचा एमती से कहिबनी अल्टीमेटली एजेंट बुझिबार अछि जदी तार से प्रिंसिपल रो जागर से अच्छेली कहले से किमिति तार माने से किमिति लॉस प्रोटेक्ट हेगी रही थांदा सिमिति आगे से प्रिंसिपल को लॉस रो प्रोटेक्ट करिगी रखिबो कोन पे रखिबो ना जदी इमरजेंसी केस हला किछि राइट वगैरह हला किबा कोन वर्षा ही होची वर्षा हेले गुड्स उडा बाहर रहे छी मत कहिनी प्रिंसिपल मु कोन पे बाहर माने भीतर रखिबो कंसीडरेशन तो दोनी गुडले गुड एंदी कहले हबो कि नाही जदी तार गुड्स हेतिले से भीतर माणी रखि थांदा तो सेमिति आगा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस रे जनरल केस रे कोले मनुष्य किंदी एक्ट करिवो तार गुड्स हेतिले से किंदी एक्ट करिवो सिमिति आगा से एक्ट करिबार छ हला विदाउट इवन मेंशनिंग हेले एग्जाम रे क्वेश्चन कोन आस्तले सुनो से कहले कि प्रिंसिपल कहिछि कि तू मु जेति कि जिंस कहिछि सेति कि जिंस तू करे बस एनफ होम कहि ना के ले भी ऑब्वियसली स्पेशली जति कि पैसा दो नांदी से कहि बस एति टिके कर दे गुटे कर दे हेला तो से कहियो कोन एग्जाम रे क्वेश्चन आस्थिला कि से जति कहि देछि कि किछि दरकार नै ले कहि ये कोन करिया दरकार कि इज इट एक्चुअली नेसेसरी और नॉट तो से कहिछि कोन सेक्शन 189 prescribes the case of emergency माने in the case of emergency the agent whoever is an agent सी जदी जनरल प्रूडेंस रे ता गुड्स किंदी प्रोटेक्ट करथना ही इज स्टिल रिस्पांसिबल टू प्रोटेक्ट द गुड्स ऑफ द प्रिंसिपल आल्सो तो एडा होची हमरो एग्जाम क्वेश्चन क्लियर बुझी पालो एग्जांपल्स देखो हमरो सब एजेंट देखो सब एजेंट जाय एंड एजेंट्स रो ड्यूटी जहां भी अच्छे मैं नेक्स्ट क्लास रे पढिबा दैट्स वेरी इंपोर्टेंट तो सब एजेंट देखो सॉरी सेक्शन नंबर 190 provides that when agent cannot delegate his authority an agent cannot lawfully employ another to perform acts which he has
expressly or impliedly undertaken to perform personally unless by the ordinary custom of a trade a sub-agent may or by the nature of agency a sub-agent must be employed. देखो से कौन कहूची ना जदी गुटे लोक अछि से लोक कोन असिस्टेंट रखला कि एजेंट रखला बहुत वैल्यूएबल गुड्स गोल्ड डायमंड जहाँ भी प्लैटिनम वगैरह अछि से सब जिंस देछि वैल्यूएबल हो नॉन वैल्यूएबल हो से गुटे पर्सन को अपॉइंट करछि एजेंट हिसाब से जदी अपॉइंट करछि तो ओनरशिप राइट तो प्रिंसिपल पाखरे आगा अछि ना ओनरशिप राइट ता पाखरे अछि अब ए एजेंट ता कोन मो वाले टिके स्टाइल मारी को ये आउट एजेंट को अपॉइंट करि पारि अनलेस से लोक कहिछि कि आउट एजेंट रो इंटरफियरेंस ता दरकार बुझी पालो ओनर जदी परमिट करछि तमे सब एजेंट हानि पारिबो ओनर जदी परमिट करनी तमे सब एजेंट केबे भी रखि पारिबोनी इवन इफ इट्स योर ओन सन हेले भी तमे रखि पारिबो तो से कोन कहउछि ना जदी कामडा एमिति ना देखो गुड्स अछि गुड्स कोन फर्स्ट तुमको फ्लाइट रे आसीबो देन ट्रेन रे आसीबो देन शिप रे जिवो तो गुटे एजेंट दिडा जा काम करे पारे प्रिंसिपल हमको फ्लाइट रे पठे देबो फर्स्ट एजेंट जे भी अछि से रिसीव कर देबो ट्रेन रे आउ थर्ड एजेंट जे भी अछि से जेतले बोट रे धरि के जिवो तो सेकंड एजेंट सब एजेंट रो दरकार टे निहाती अछि तो जे तो निहाती अछि एडी तो जे भी अछि सब एजेंट हमरो से सब एजेंट रो पर्पस जे तो एडी अछि देन से अपॉइंट करि पारे बट जे तो एडी पर्पस टे नाही किछि पर्पस नाही ये खाली स्टाइल मारी कहि कि गुटे सब एजेंट को आनी कहले केबे हले हबन क्लियर सो एडा तो सब एजेंट रो मीनिंग टा म ऑलरेडी कहि देले देखो अ पर्सन employed by or acting under the control of the original agent in the business of the agency जे भी अछि सब एजेंट माने होची ये एजेंट अंडर रे काम करछ बट स्टिल से प्रिंसिपल अंडर रे काम करछ ऑब्वियसली ए जे भी अछि से बी अंडर रे काम करछ हैला आ बी अंडर रे सी काम करछ तो सी भी ए अंडर रे काम करला हैला ना नहीं बुझिलो ना क्लास मॉनिटर अछि रे हैला क्लास मॉनिटर का अंडर रे काम करछ टीचर अंडर रे टीचर प्रिंसिपल अंडर रे हेले प्रिंसिपल आसी कहि टिके आसिलो काम आसी कहले नाही मु टीचर कहले जेबी कहले हबो कि नाही बुझला ना तो अल्टीमेटली ही इज द सब एजेंट तो section 192 provides that where a sub agent is properly appointed the principal is so far as regard to the third person represented by the sub agent and is bound by hela se kon kochi se bound achi and responsible for his acts as if he were an agent originally appointed by the principal mo jo example ta deli seta section number 192 माने प्रिंसिपल जदी आसी कि कहयो हेलेले ताको काम करे अछि तार एजेंट माने सब एजेंट जे भी अछि तार प्रिंसिपल के प्रिंसिपल होछि तार एजेंट आ एजेंट रो प्रिंसिपल जे सी एल प्रिंसिपल माने ओनर आ तार सानो ओनर कोन कहउछन्ती बड़ बाबू सानो बाबू जहा भी डाकुछन्ती तो एमिति तो एजेंट इज रिस्पांसिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट अच्छा जदी सब एजेंट गुड हेला किछि से गुड्स मिस कर देला सो प्रिंसिपल फर्स्ट का गाली करियो एजेंट को गाली करियो देन तापर सब एजेंट को मिस की गाली करियो हैला कि डिसाइड करिया कोन गाली करिया कि गाली करिया बाडे आना टियाना कोन करिया the sub agent is responsible for his acts to the agent को से immediately जे भी अछि तमे इंडस्ट्रियल लॉ रे पढ़थिबो immediate employer माने कोन तम ऊपर की अछि ताको तमे नोटिफाई करबो से जाय कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को but not the principal except in cases of fraud or willful wrong हैला से कोच कोन जे सब एजेंट अछि से अच्छा देखो मु गोटे पॉइंट एक्स्ट्रा कहि देली एडी सब एजेंट जे भी अछि प्रिंसिपल आसी कि सब एजेंट को डायरेक्टली केबे गाली करि परियन हैला से कहउछ देखो लॉ कहउछ सब एजेंट को डायरेक्टली से गाली करि परियन से खाली एजेंट को गाली करि परियो आ एजेंट सब एजेंट को गाली करि परियो बट जदी सब एजेंट फ्रॉड करछ माने घपला करछ से पैसा धरकी पळिछ तो से केस रे प्रिंसिपल ताको गाली करि परियो हैला इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट देखो मु एक्स्ट्रा कहि देली एडी फाइन तो कौन करछि इमीडिएट एम्प्लॉयर को से रिपोर्ट करि परियो माने प्रिंसिपल आसी ताको वर्क असाइन करि परियो रे बट गाली करियो मात्र से डायरेक्टली गाली करियो तमे कहिछो कि मते आली कहि आसी अंकित कहिछन आंटी मते भूल बुझितन तमे तांको पचर तो प्रिंसिपल आउरी रागी जे आउरी ताको गाली करियो माने देखो माडो से डायरेक्ट मारनी आकु इमती दी कथा कहयोगी एडी दी माडो खाइतन या चारटा माडो खाइबे लॉ इमती प्लान करछ तो section 193 provides for the responsibility of the agent for the sub agent appointed without authority देखो एडा without authority न थाई कि जदी मु जनी कहली स्टाइल मारिया को जदी गुटे सब एजेंट को आनी दिछ कोन हबो where an agent without having authority to do so has appointed a person to act as a sub agent the agent stands towards such person in relation of a principal to an agent and is responsible for his acts both to the principal and to the third person. The principal is not represented by or responsible for the acts of the person so employed, nor is the person responsible to the principal. माने authority जदी नाही तो किछि भी जिंस valid रहनी
माने कौन होतिला आगरे अथॉरिटी थिला तो पाखरे निजर पावर नहीं हैला निजर पावर नहीं तू काउ केंदी गाड़ी करू आमे जो केस रे पढ़ नथिलो कि से थर्ड पर्सन आसी कि कहय कोन तू एडा रखि पारुन सिक्योरिटी मु भांगी दी इन्दी करी सिन्दी करी तो कोन हला ता ऊपर केस फाइल हैला ना तो एडी अल्टीमेटली से कोच जदी अथॉरिटी न थाई कि तू आ जण को अथॉरिटी हिसाब रे रखो हली कले से सुने होगी बुझला ना नहीं तो सेडा कोच last topic for today देखो section 194 provides that where an agent holding an express or implied authority to name another person to act for the principal in the business agency has named another person accordingly, such person is not a sub-agent but an agent of the principal for such part of the business of the agency is entrusted to him. माने जाकु जेतिकी पावर दिया अछि सेतिके काम बुझिबो अल्टीमेटली जदी गोटे एजेंट अछि से एजेंट को कहै छै कि तू बरहमपुर जहां भी प्रोविंस वगैरह अछि तो सेडा बुझिबो तो से बरहमपुर आगे बुझिबो गंजाम सब जगह से बुझिया दरकार नहीं जदि बुझिले भल कथा बट मना करो तो बुझिबो कोन हैला तो से अल्टीमेटली कोन कहछि होल्डिंग एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी टू नेम अनदर पर्सन टू एक्ट फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी जदि एजेंसी भीतर से कहछि आउडे पर्सन को अप्लाई करछि किबा इम्प्लाई करछि तो से केस रे कोन हो हैज नेम्ड अनदर पर्सन अकॉर्डिंगली सच पर्सन इज नॉट अ सब एजेंट बट द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल अच्छा प्रिंसिपल जदि काहू कहिछि कि तू एले मो सहित काम करे देखो से गुटे जिंस कहछि ए बी अंडर काम बी ए अंडर काम करछि एंड सी बी अंडर काम करछि तो सब एजेंट के एडी बी के सब एजेंट के सब एजेंट होछि सी एजेंट होछि बी बट ए जो अछि ए फर्स्ट ए अंडर बी काम करछि ए अंडर सी बी काम करछि तो सब एजेंट के एडी दिजन एजेंट सब एजेंट की अच्छी की बुझिला ना से सेडा कोचे पॉइंट तो जदी इमिति कुहा होची तो प्रिंसिपल अगर डिसाइड करिवो कि ये केते की काम करे और ये केते की काम ठीक अछि फाइन तो नेक्स्ट क्लास में देखिया एजेंट्स की रैटिफिकेशन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हैला रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी जेति की से लंबा करी की देनी कि सब गुडा को वन लाइन जिंस जा सब वन लाइन हमर बुझिला ठीक अछि hope it's clear thank you